So let's start with the ribosomes. Ribosomes were first studied by Brown and Robinson in plant cell. Pallet studied the ribosomes in animal cells. सबसे पहली बार पैलेट ने ये फाइंड करा, ये डिस्कवर करा that the ribosomes they are made up of RNA, that one of the component which is present in the ribosome, that is RNA. That's why the ribosomes, they are also known as pallet particles. अब जो राइबोसोम्स है इनके अंदर प्रेजेंट है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है, and along with that there is presence of proteins. So it means they contain nucleic acid and protein. Due to this, the ribosomes, they are also known as ribonucleoprotein organelles. Now you please keep this in mind, the ribosomes के आसपास अब membrane absent है. Now they are non-membranous organelles. They are non-membranous organelles which are present both in the prokaryotes as well as in the eukaryotes, and in the case of the mature RBC, these cell organelles they are absent. अब ये जो राइबोसोम्स हैं, they are described on the basis of sedimentation coefficient. Ribosomes, they are described on the basis of sedimentation coefficient. Now, on the basis of the sedimentation coefficient, the two types of the ribosomes, they are distinguished, that is 70S and 80S. So, first of all, I have to discuss what is sedimentation coefficient here. Now, you might be knowing about the centrifugation machine. Yes? Centrifugation machine, it is an equipment which is generally run by the electric current, and this equipment puts an object in rotation. तो centrifugation machine का क्या काम है? Centrifugation machine, it puts an object in रोटेशन, राइट? तो यहां पर मैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन फॉर्म कर रही हूं. लेट्स से दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, और इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर ये मैंने प्लेस करी है टेस्ट ट्यूब्स. So these are the test tubes inside the machine. I have placed them, और इस test tubes के अंदर मान लेते हैं present है cellular material, cellular components. तो इस test tube के अंदर present है cellular components. अब इस centrifugation machine का क्या काम है? It will rotate the object. Yes? It will put an object in rotation. तो जैसे ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रोटेट करेगी, जो सेलुलर कंपोनेंट सबसे हैवी है, सबसे डेंस है, these cellular components they will settle down first in the centrifugation tube. तो जो कंपोनेंट सबसे हैवी है, जो कंपोनेंट्स जिनका लार्ज साइज है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में सबसे पहले नीचे सेटल डाउन करेंगे, सेडिमेंट करेंगे.
तो हैवियर कंपोनेंट जो है वो पहले सेटल करेगा, हैवियर कंपोनेंट है वो पहले सेडिमेंट करेगा, एंड द रेट एट विच द सेडिमेंटेशन विल अकर दैट इज नोन एज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो बात समझ आ रही है? सेडिमेंट का क्या मतलब हुआ? टू सेटल डाउन, and the speed, the rate at which the sedimentation will occur, what it is known as sedimentation coefficient. So we can write this. The rate, the speed at which the sedimentation will occur. This is the sedimentation coefficient. Now, sedimentation coefficient is expressed in the Swedberg unit. It is expressed as Swedberg unit, which is written as S. तो यहां पर मैंने क्या लिखा है? 70S and 80S. Sedimentation coefficient है ये राइबोसोम का, and its unit is S, that is Swedberg. अब जिस राइबोसोम का साइज बड़ा होगा वहां पर सेडिमेंटेशन जल्दी होगा, और इन राइबोसोम्स का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, राइट? तो मीन्स मैंने यहां पर लिखा है 80S, यहां पर मैंने लिखा है 70S, तो किसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ज्यादा है? इसका. सो इट मीन्स दैट दीज राइबोसोम्स दे आर लार्जर इन साइज. सो आई एम रिपीटिंग दिस इंफॉर्मेशन. जिन राइबोसोम्स का साइज बड़ा होगा उनका सेडिमेंटेशन जल्दी होगा, and these ribosomes they will have higher sedimentation coefficient. तो यहां पर इन ribosomes का sedimentation coefficient ज्यादा, it means they are going to have the larger size as compared to the 70S ribosomes. So what is sedimentation? That is to settle down. And what is the sedimentation coefficient? That is the speed at which the sedimentation is occurring. So the ribosomes, they are described on the basis of the sedimentation coefficient. So let's learn more about the different types of ribosome. Now, in the case of the प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, एंड इट्स वेरी वेल नोन टू ऑल ऑफ यू दैट द टाइप ऑफ द राइबोसोम एसोसिएटेड विद द प्रोकैरियोट्स दैट इज 70S. Now in the case of the eukaryotes, in the eukaryotes, the ribosomes, they can be present in the cytoplasm, they are also present in the organelles. अब जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है राइबोसोम, यू कैन कॉल देम एज साइटोराइबोसोम्स, और साइटोप्लाज्म के अंदर द टाइप ऑफ राइबोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट दे आर 80S. Yes, 80S are there in the cytoplasm. अब साइटोराइबोसोम्स जो है ये फ्री भी हो सकते हैं और ये बाउंड भी हो सकते हैं. So they can be freely present in the cytoplasm, or you know they are bound, and they are bound to the cell organelle, that is endoplasmic reticulum. और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स के साथ एसोसिएशन शो करता है, दैट इज नोन एज RER. Now these ribosomes, they are also associated with organelles. Ribosomes are associated with the organelles. So which organelles they are associated with the ribosomes? That is mitochondria and chloroplast. Mitochondria के अंदर जो ribosomes present है, you can call them as mitoribosomes. And these ribosomes, they are 70S type, और प्लास्टिड्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट है, दे आर नोन एज प्लास्टिडोराइबोसोम्स, एंड द प्लास्टिडोराइबोसोम्स दे आर आल्सो 70S टाइप. अब जो राइबोसोम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ two subunit. One is smaller and another one is larger. So let's see what is the structure of these smaller and larger subunits.
Now the ribosome consists of larger and smaller subunit. जो larger subunit है that is having dome like structure, और जो smaller subunit है that has cap like structure. So first of all here I will be making larger subunit. Yes, so this is larger subunit और इस larger subunit के ऊपर attachment होगी smaller subunit की. Smaller subunit का cap like structure है. Right? So this is larger subunit and this is smaller subunit. Larger subunit के ऊपर smaller subunit की positioning ऐसे होगी कि बीच में एक tunnel बनेगी. Yes, there is formation of a tunnel और इस tunnel के through passage होगा RNA का, that is the messenger RNA. So you are getting this? Smaller subunit और larger subunit, इन दोनों की पोजीशनिंग ऐसे होगी कि बीच में एक टनल बनेगी. सो यू कैन सी हियर द टनल इज फॉर्म और इस टनल के थ्रू पैसेज होगा. देयर विल बी पैसेज ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड यू नो दैट मैसेंजर आरएनए इट कंटेन्स कोडेड इंफॉर्मेशन. It contains coding information about the sequence of amino acids in the protein. RNA के ऊपर present है information and this information will decide the sequence of the amino acid present in the protein formed by the ribosomes. Now, sometimes what happens कि ये सिंगल मैसेंजर आरएनए है और इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर several ribosomes they will join. Messenger RNA there is held by several ribosomes. तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच्ड है. ये मैंने दिखाई है स्मॉलर सब यूनिट और ये लार्जर सब यूनिट इन द राइबोसोम एंड दिस स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म दिस इज नोन एज पॉलीसोम, दिस इज नोन एज अर्गासोम और ऑल्सो नोन एज पॉलीराइबोसोम्स. राइट. अब ये जो दो सब यूनिट्स हैं राइबोसोम के अंदर, इनकी यूनियन और इनकी सेपरेशन इट इज डिपेंडेंट अपॉन द मैग्नीशियम आयंस. यस, प्लीज नोट दिस डाउन. जो दो सब यूनिट्स है राइबोसोम के अंदर, इनकी जो यूनियन है और सेपरेशन है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द मैग्नीशियम आयन कंसेंट्रेशन. इफ द कंसेंट्रेशन इज 1 to 2 मिलीमोलर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर राइबोसोम की जो दो सब यूनिट्स हैं वो ज्वाइन करेंगी. Yes, they will be joining of the two subunits of the ribosome. If the concentration is less than this, अगर concentration इससे कम है, so now the two subunits of the ribosomes they are separated. The smaller and larger subunits they are separated. और अगर concentration इस value से ज्यादा है, अगर concentration 1 to 2 millimolar से ज्यादा है, so now what will happen? The two ribosomes they will join.
Yes, the two ribosomes, they will join, results in the formation of dimer. तो अगर इतनी कंसंट्रेशन है तो राइबोसोमल सब यूनिट्स ज्वाइन करेंगी. अगर कंसंट्रेशन इससे कम है, the smaller and larger subunits will separate, and if the concentration is more than this, then the two ribosomes, they will join, resulting in the formation of dimer. Now after this, let's learn more about the 70S and 80S type of the ribosome. Let's learn about the different types of the RNA and the proteins associated with them. So in the 70S ribosome, this is smaller subunit. The smaller subunit is 30S. This is larger subunit. The larger subunit is 50S. जो smaller subunit है, वहां पर जो RNA present है, that is 16S ribosomal RNA. और इसके साथ साथ there is presence of 21 protein molecules. जो लार्जर सब यूनिट है वहां पर जो आरएनए प्रेजेंट है दैट इज 23S राइबोसोमल आरएनए एंड 5S राइबोसोमल आरएनए and along with that there is presence of 34 protein molecules. So now you please keep this in mind कि smaller subunit is 30S, larger subunit is 50S, 30 plus 50 is 80S. But here what is the sedimentation coefficient of the complete ribosome? That is 70S. So it means the sedimentation coefficients, they are not additive. You cannot add them, right? Now coming to the second one, that is 80S type. 80S type के अंदर जो smaller subunit है that is 40S और जो larger subunit है that is 60S. Smaller subunit के अंदर जो RNA present है that RNA is 18S ribosomal RNA. Along with that, now there is presence of 33 protein molecules. Larger subunit के अंदर present है 28S ribosomal RNA. Then 5.8S ribosomal RNA. 5S ribosomal RNA. And now there is presence of 40 protein molecules. So यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 70S और 80S राइबोसोम्स के अंदर एक RNA है जो कॉमन है. Yes, which RNA which is common? That is 5S ribosomal RNA. 5S ribosomal RNA, it is present both in the 70S and 80S. It is common RNA between these two types of the ribosomes. Now in the 70S ribosome, the ratio of RNA to protein is 60-40. That is 60% RNA, 40% protein. But in the case of the 80S type of the ribosomes, the ratio of RNA to the protein is 40-60. Protein का content ज़्यादा है, RNA का content कम है. Now it's very well known to all of you. It's a known fact that the ribosomes, they are involved in the synthesis of proteins, so they are the protein factories. Yes, protein के synthesis में involved है, they are the protein factories. It means the ribosomes, they possess enzymes for the synthesis of protein. Yes, एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से जोड़ने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है, दैट एंजाइम इज एसोसिएटेड विद द राइबोसोम. सो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होगा,
one amino acid, it is joined with the another amino acid with the help of peptide bond. इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज. Peptidal transferase, and this peptidal transferase, it is associated with the ribosome. In the ribosomes, they are associated with the larger subunit. Now you please keep this in mind. ये जो enzyme peptide bond बनाएगा, this enzyme is RNA based. अभी तक आपने क्या पढ़ा? The enzymes, they are proteinaceous. But now there is difference. Here there is difference. These enzymes, they are RNA based. जो enzyme RNA based है, इन enzymes को हम कहेंगे ribosome. So is it clear कि यहाँ पर जो enzyme peptide bond बनाने में help करेगा, that enzyme is RNA based. Yes, the enzymes which are RNA based, they are known as ribosome, and in the case of the ribosome, these enzymes, they are associated with the larger subunit. So this is all about the ribosomes, about the protein factories. Now in the next class, I will be starting with the next component of the eukaryotic cell, that is cytoskeleton. Thank you so much.